That different stages of recombinant DNA technology. That is, first one is of isolation of DNA, second one is of cutting of DNA, third one is of separation of DNA, fourth one is of amplification, and fifth thing one is of ligation of DNA with the vector. That is the ligation of DNA into vector. Ligation of DNA into. We studied these four sequences, that is of isolation of DNA, cutting of DNA, separation of DNA, and amplification of DNA. Now, that ligation of DNA. Ligation means how to that foreign DNA will be ligate with the plasmid. In first, if I explain all these steps through the examples, through the diagrams, that is of, suppose here this one is of foreign DNA, okay, and this one is of vector DNA. This one is of vector DNA. This is of foreign DNA. This one is of vector DNA. Firstly, both the DNA cut with the same restriction item. Cutting with same restriction endonuclease nuclease enzymes. In this way, this will be having small fragments. Okay, and this will be cut like this way. तो जितने कम पोर्शन होंगे उतना ही प्रोसेस इजी होगा. If this restriction endonuclease enzyme cut a DNA from many points, suppose यहाँ पर ये बहुत सारी जगह से काट देगा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाएंगे. That process will be highly complicated. अगर यहाँ एक ही जगह से काटेगा तो ये बहुत इजी गोइंग होगा. तो पहले इनको कट कर दिया, कटिंग करने के बाद इनको सेपरेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स के थ्रू इनको सेपरेट कर दिया जाता है बोथ द फॉरेन डीएनए के डिफरेंट पार्टिकल्स. फिर देन एप्लीकेशन किया जाता है दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ दैट डीएनए. इसकी बहुत सारी कॉपी क्रिएट की जाती है. उसके बाद एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफ लाइगेशन ऑफ डीएनए इनटू द वेक्टर. इस डीएनए को वेक्टर के अंदर लाइगेट किया जाता है. लाइगेट करने के लिए क्या होता है, दिस वेक्टर एंड दिस फॉरेन डीएनए हैविंग द स्टिकी एंड्स. इन दोनों में क्या होना चाहिए, स्टिकी एंड्स होंगे. स्टिकी एंड्स नहीं होंगे तो ये दोनों लाइगेट नहीं होंगे. ये स्टिकी एंड्स मींस यहाँ पर सीक्वेंस जो होता है वो पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ जो सीक्वेंस है वही यहाँ सीक्वेंस होगा, मतलब कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा. तो उस कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस से ये दोनों जुड़ जाएंगे. लाइगेज द foreign DNA, this foreign DNA into host. Host means this vector के अंदर इसको वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए इनटू, वी कैन से प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड के अंदर इसको ज्वाइन कर दिया. दिस वन एंड दिस वन ज्वाइन टुगेदर हियर.
this is the portion of if I draw this portion with the help of colored chalk. So this is the different part, means that we can say this is a foreign DNA and this is a vector DNA. Means here we ligate or join the foreign DNA with the vector. Then vector is inserted into host. This is the ligation of DNA into the vector. तो vector के अंदर DNA को ligate कर दिया. And fifth next step is of insertion of recombinant DNA into insertion of recombinant DNA into host. This one is of recombinant DNA. rDNA means recombinant DNA. This is the recombinant DNA, and this recombinant DNA will be inserted into host. Suppose this is the host of E. coli. This is the E. coli. E. coli, and it will be inserted in this. इसके अंदर इसको insert किया जाएगा. So how we insert this recombinant DNA into the host organism? So different method is there for the insertion of recombinant DNA into hosts. First of all, that is of chemical methods. Chemical methods. Chemical methods. What is the chemical methods? If we treated this E. coli with the help of cation, if we treated this divalent cation or we can say calcimine से इसको ट्रीट कर दिया जाता है. तो and after that we introduce these recombinant DNA. This E. coli will be take up the recombinant DNA. That is of chemical methods. यानी पहले E. coli की सेल मेम्ब्रेन को केटाइन से ट्रीट कर दिया जाए. ट्रीट करने पर then we introduce the recombinant DNA to E. coli. That E. coli will be take up this recombinant DNA. Another method is of heat and shock. Heat and shock method. Heat and shock method. In heat and shock methods, that is these cells is kept on 42 degrees Celsius and on the ice. एक बार 42 डिग्री सेल्सियस पे इनको ले जाते हैं और दूसरी बार इनको किस पे, आइस पे रख दिया. दैट इज द हीट एंड शॉक मेथड्स. मींस हीट का शॉक दिया जाता है. दैट इज ऑफ 42 डिग्री एंड आइस, 42 डिग्री एंड आइस. In this way, the cell membrane permeability will be changed, and due to which these host cell will be take up their recombinant DNA. Heat shock method के through भी we can insert that recombinant DNA into the host. So in both the methods, that chemical method से भी chemical membrane permeability, cell membrane permeability change हो सकती है, और heat and shock method से भी cell membrane permeability change हो सकती है. Another method is of physical methods. Physical methods. Through physical methods we can also insert that recombinant DNA into the host. What is the physical methods? So different types of micro injections available. That micro injections directly injected into the nucleus. That recombinant DNA. Recombinant DNA is directly inserted into the nucleus of that host cell through the micro injection. So micro injection के through भी
इनको इंसर्ट किया जा सकता है। और फिजिकल मेथड में आजकल और नई मेथड चल रही है, दैट इज बायोलिस्टिक गन और वी कैन से जीन गन। जीन गन के थ्रू भी नॉर्मली दैट cells are bombarded with the small genes, or gene gun के through भी directly these recombinant DNA will be inserted into the host cells. So these are the different methods through which these recombinant DNA will be inserted into the host cells, and after that the host cell will be the multiply. इसके बाद क्या होता है, होस्ट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, और जब भी होस्ट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये इनमें जो जीनोम है वो भी मल्टीप्लाई होता है, और जीनोम के साथ साथ ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी अपनी कॉपी तैयार करता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपी तैयार, व्हेनेवर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई, दैट this portion or foreign part of DNA is also multiplied. Whenever it produce product, so this portion also produce its product. तो इसके साथ साथ दोनों काम होता है। डीएनए इंसर्शन का एक और मेथड्स है, ये इसके अंदर आजकल रिट्रोवायरस के थ्रू और एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन जो प्लांट वेक्टर के थ्रू भी डीएनए को एंटर किया जा सकता है। आफ्टर द एंटरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, इट विल बी मल्टीप्लाई, इट प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, एंड व्हेनेवर इट प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट, दैट दिस पोर्शन आल्सो प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ दिस स्टेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, the last stage is of obtaining culture the foreign gene product, or culture the foreign gene product. Culture the, how culturing is there? Culturing is this, जब ये जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ आ चुका, अंदर आ चुका, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा, अपना प्रोटीन तैयार करेगा, एंड दैट प्रोडक्ट और दैट प्रोटीन इज द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो इस वाले पोर्शन का जो प्रोडक्ट तैयार होगा और उस प्रोडक्ट को अपन ले सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप, that is of isolation of DNA, cutting of DNA, separation of DNA, amplification, ligation of DNA, insertion of DNA, and culturing of the foreign gene product. So for formation of gene product, different bioreactors or different vessels is required, different types of vessels is required. That vessels is known as bioreactors. Bioreactors, these are the culture vessels or different types of tools in which we produce the biological or biotechnological products. We can say that is of bioreactors, or there may be continuous culturing system in which we input the different raw material and we take the different types of products. Bioreactors having different components. Bioreactor having the following components, and these components are an agitated system and agitator system which can agitate the different raw material को वो घुमाता रहता है, and oxygen delivery system which deliver the oxygen, a foam control system which control the foam which is formed inside the bioreactor system, and temperature control system
which control the temperature of that bioreactor. Each control system which control the pH, because these are the bioreactors and different biological organisms do function at the particular pH, and so these are the different components which is present inside the bioreactor and maintain the product quality and quantity. I want to draw one bioreactor here. Diagram of one bioreactor. This is here. This has different planes in which whenever we move it also it will be moved and mix up the different raw material which is present inside this bioreactor. So and through we remove the air, so in the air, that is the sterile air, steam post sterilization, यहाँ से steam insert करते हैं और sterilization यानी उस प्रोडक्ट को अगर having that contamination, it will be contamination free with the help of steam. And this one is your accident based pH control system. pH control system through which we can control the pH of this bioreactor. Here motor is there that helping the agitating of different raw material. Motor is there, and normally this another type of bioreactor I draw here. This simple bioreactor here. This is agitator is there which rotate and mix up the raw material, and through it we input the air or oxygen. In the presence of oxygen, that biological reaction will be increased. So this is normal type of string bioreactors. So different types of bioreactors available in markets that produce bioproduct. Continuous culture medium is there or discontinuous. In continuous culture medium, from one side we input the raw material, other side we taken out the products. That is a cultural system, continuous culture system. Sometimes discontinuous is there, in which we can input the raw material, after processing we taken out the different raw material. So not raw material, that is a product is there. So continuous and discontinuous system is there. And the last topic of this chapter, that is of downstream processing. Downstream processing. After obtaining the product, what will we do? प्रोडक्ट अगर मिल जाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So after the obtaining product, we have to separate two things will be there. Separation will be there. Means that good product or bad product or impurities will be separate out. जैसे प्रोडक्ट आपके पास बाहर आ गया, मशीन से बाहर आ गया, बायोरिएक्टर से बाहर आ गया, we have to separate out that different product. Then purification of product. Purification. We have to purify or identify it is pure or not, it is contaminated or not, and then after sent to the market or quality control system. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को भेजा जाता है, जिससे वो उसकी मॉनिटरिंग करती है और उसको
जांच करती है और मार्केट को वो अवेलेबल कराती है. तो दैट इज अकर इनसाइड द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. So this is the these are the different processes or principle which is involved in the biotechnology. Through we produce the different types of biotechnological project. Nowadays inside the market different types of medicines, different types of industrial product, different types of new types of organism is also made from with the help of biotechnology. So day by day in biotechnology various changes is there, and we have to know about these biotechnological product and biotechnologies.